हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग 2018 का एचपी बोर्ड का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। राइट चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन नंबर 28, देखो आप सीधा स्क्रीन पे आ जाओ। आपसे इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप देख लो कि इसमें इस क्वेश्चन में आपसे ये क्या कह रहा है। देखो, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो चिल्ड्रन, आपके पास एक कॉन है। देखो, आपको कॉन, आपने छोटी क्लासेस में कॉन के सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। सो दिस इज योर कॉन, राइट। इस कॉन में दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट and this is the slant height. So this is a right circular cone. If you simplify, if you apply Pythagoras theorem, you get here L square is equal to R square plus H square. Right children? यहाँ से आपने R square फाइंड आउट करना, तो R square हो जाएगा आपका, देखो, L square माइनस H square। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। वॉल्यूम होता है कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम वॉल्यूम में लिख सकते हैं 1/3 पाई। देखो, आपने ऊपर से आर स्क्वायर की वैल्यू भर दी यहाँ पे, यू गेट हेयर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और इसको भी थोड़ा सा आप, एक यहाँ पे एच भी है, देखो हमारे पास, जस्ट यू सिंप्लीफाइड फर्दर, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट हेयर 1/3 पाई, हेयर यू गेट दिस इज एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। चलो, ये मैंने सेम ही चीज़ लिख दी। अब आपने क्या करना है चिल्ड्रन, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इस चीज़ को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट वी विद रिस्पेक्ट टू एच। आपने डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एच। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखो, डी वी अपॉन डी एच। इसकी डिफ्रेंशिएशन में अब कांस्टेंट चीज़ तो मैंने बाहर वैसे लिख दी 1/3 पाई। थोड़ा आप देखो, एल स्क्वायर, एच की डिफ्रेंशिएशन चिल्ड्रन 1 होती है, और ये एच क्यूब है, तो ये आपके पास आ गया -3 एच स्क्वायर, है ना, एन एक्स रेस्ट पर n-1 का फॉर्मूला लगा के। नाउ आप क्या करो इसमें कि डी वी अपॉन डी एच को जीरो कर दो। मैक्सिमम मिनिमम में आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो, ये आपके पास आ गया 1/3 पाई एल स्क्वेयर माइनस 3 एच स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एल स्क्वेयर माइनस 3 एच स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, और एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 एच स्क्वेयर। और यू जस्ट सिंप्लीफाइड फर्दर। आप देखेंगे यहाँ पे 1/3 को मैंने इस तरफ को ले लिया, और वहाँ पे आ गया एच स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। थोड़ा और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 1/√3, है ना, वहाँ पे आपके पास है एच अपॉन एल। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, एच अपॉन एल, ये वाला एंगल चिल्ड्रन इसमें थीटा है अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा जो है आपका, वो होगा एच अपॉन एल। इस चीज़ को आपने यहाँ पे भर दिया। देखो, 1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग अगर आप लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लगाओ, देखो, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 1 हेयर, राइट,
this is 1 here, this is root 3. You can take it as x. So if you apply the Pythagoras theorem here, you get under root 3 square is equal to 1 square plus x square. So here you get 3 is equal to 1 plus x square, and x square comes out to be 3, 2, x comes out to be प्लस माइनस अंडर रूट 2. तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 लिख दूँ चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे, एंड देन आई कैन फाइंड फ्रॉम हेयर tan थीटा, दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे 2 आया चिल्ड्रन है, अंडर रूट 2. सो इट कम्स आउट टू बी, सो थीटा we can find from here, theta comes out to be tan inverse under root 2. So you just check out in the question, you have to find in this case that the semi vertical angle, means this angle theta is nothing, tan inverse under root 2. So this is your question number 28, children. Likewise, if I go to this question number 28th और पार्ट, इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं चिल्ड्रन. आपने इसमें क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे ये लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. चिल्ड्रन आपने इसमें सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करना पहले विद रिस्पेक्ट टू x. You get here 3x square minus 6x minus 9. Now you simply put dy over dx is equal to 0. So here you get 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0. You take 3 common, x square minus 2x minus 3 is equal to 0. You simplify it further, you get x square minus 2x minus 3 is equal to 0. You simplify it further, this is minus 3x plus x minus 3 is equal to 0. You take x common, x minus 3 plus 1 common, x minus 3 is equal to 0. Simplify it further, this is x minus 3, x plus 1 is equal to 0. Now children, from here you can find the value of x, that comes out to be 3 and minus 1. So one thing that you should keep in your mind, why this is equal to 0. See, if you have any curve, if you have any curve like this, any curve like this, if you draw a tangent and if this tangent is parallel, it means tan theta is equal to 0. It means its slope is equal to 0. So that is why I have taken this thing 0 here, right? So you get two values, one is x is equal to 3. So put this value here in this equation. So y is equal to, this is 3 cube minus 3 square minus 9 into 3 plus 7. So if you simplify, it can cancel out children, it comes out to be minus 27 plus 7. So the value of x is minus 20. So one of the point is 3 comma minus 20, and another value of x is minus 1. So if you simplify it further, y is equal to minus 1 cube. Just put all these values here, right? Here you get minus 3 minus 1 square 9 minus 1 plus 7. So if you simplify it further, here you are getting minus 1, here getting minus 3 plus 9 plus 7. So if you simplify, minus 4 plus 16, answer comes out to be 12. So the answer to this part is, the another point is minus 1 comma 12. So these are the 2 points at which tangent to this curve will be parallel to
x-axis. Okay children, it's parallel to x-axis. Slope is 0 in this case. Then if you go through the next question here, find the area of the region bounded by the curve. So check out, you have here two equations children. One is equal to 4y is equal to 3x square. This is your equation number 1. Second equation is 2y is equal to 3x plus 12. You just find the value of y. It comes out to be 3x plus 12 upon 2. Let it be number 2. Now put y in equation number 1. So here you have 4 3x plus 12 upon 2 is equal to 3x square. You just simplify it further. Here you get 6x plus 24 is equal to 3x square. You simplify it further. This is 3x square minus 6x minus 24 is equal to 0. X square minus 2x minus 12 is equal to 0. So, is it clear children what I have done here? Here in this case we are getting this is 2y is equal to 3x plus 12, 3x plus 12 upon 2 we are getting. Then here we get actually 8. 8 3 is a 24 children, है ना? 8. Okay. You just simplify it further. X square minus 4x plus 2x minus 8 equals 0. You take x common. This is x minus 4. Take 2 common. X minus 4 equals 0. You simplify it further. You can take now x minus 4 common. Here you get x plus 2 equal to 0. So the value of x comes out to be minus 2 and 4. Now with this information children, you have to draw a diagram, right? See, now this is your x-axis, this is your y-axis, this is the origin. Now you check out this parabola. This parabola is of this category, right? It is passing through the origin and of this category. Now you just check out the points here. One of the point is you just find these points. Suppose if x is equal to minus 2, you can find the value of y from here. Y is equal to 3 minus 2 plus 12 upon 2. So y comes out to be this point comes out to be 6 upon 2, right? So this comes out to be 3. So first point is minus 2 comma 3. So see, you just check out here this point. Suppose this is minus 2. So this point is minus 2 comma 3. So this is one point from where the line is passing. And children, for second line, you put the value of x as minus this 4. So when x is equal to 4, check out what is y then. 3 into 4 plus 12 upon 2. So y comes out to be 24 upon 2. So 12. So the next point from which this line is passing is 4 is to 12. So suppose this is 2, this is 4. So this line, you just check out this is 4 point and this point is 4 comma 12. So your line is like this. Your line is like this. So children, he is asking you to find this area. He is asking you to find this area. You have to find. So you can write here area of
शेडेड पोर्शन डेफिनेट इंटीग्रल का आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं चिल्ड्रन। देखो आपने इसको इंटीग्रेट करना है -2 to 4, दिस इज -2 to 4 y dx। रिमेंबर दिस इज योर लाइन, इस लाइन में से आपने माइनस करना है एरिया y dx। किसका एरिया माइनस करना है? ये वाला, ये। सो दैट यू कैन गेट बाय इंटीग्रेटिंग द पैराबोला -2 to 4, you can get it by integrating parabola. So you just simplify it further children, you are getting here this is -2 to 4। अब y की जगह देखो आप यहाँ पे लाइन पे सीधा लिख दो ये, दिस इज 3x प्लस 12/2 dx -2 to 4। देखिए इसमें y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, y comes out to be 3/4 x स्क्वायर। यहाँ से इस वैल्यू को सीधा आप यहाँ पे भर दो चिल्ड्रन, दिस इज 3/4 x square dx। So if you simplify it further, integration you know very well, this is half। Now integration of this part is 3x square upon 2 plus 12x, right here, and you can put the limit -2 to 4, this is -3/4, integration to this part is this, and just integrate -2 to 4, you can cancel this children here, right? So if you simplify it further, you are getting 1/2, you just put the upper limit first children, this is 3/2, 4 4 just 16 plus 48 here, right, and minus, you put the lower limit, this is 3/2 into 4 minus 24, right। Likewise यहाँ पे आपके पास है this is 1/4, this is 4 cube means 64, minus 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 plus हो जाएगा ये 2 raised to power this is 8, just simplify it further, you are getting 8 here, you just is cut it out, so answer comes out to be, see we are getting 1/2, here 8 3s are 24 plus 48 here 20 plus 48 minus here you are getting 6 minus 24 minus 18, so plus 18, right, plus 18 here, and here you are getting 1/4 into 72। तो चिल्ड्रन अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 1/2 into, see this is 50, 8 8 16 और 420 3 7 9, so you are getting 90 here children, minus 18 because 18 है ना, so here we are getting 45 minus 18, so answer to this question is 27 square unit। This is 6 marks question children, so you can practice it, this question is from definite integral। So I hope now you have understood this uh, these two questions, these three questions, in fact they are very easy questions, just keep on doing practice, keep on learning mathematics children, okay, thank you।